Yeah, so as you have seen in the thumbnail that we will look at how to calculate EBITDA margin, EBIT margin, gross profit margin and PAT margin of a company. So we will do this with a real company, not using those data from screener or Tijori, but we will calculate the real data from a company. So I will take Sarah Centriware here. We will calculate 3 year all those margin for 3 years, and all those margins from annual report of Sarah Centriware. So we don't want to rely on those screener और तिजोरी, because हर एक को आना चाहिए कि एबिटा मार्जिन और सारे मार्जिन्स एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे निकालें. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी मैं सेरा सेंटिवेयर का करता हूँ. तो लास्ट 3 ईयर के निकालेंगे अपन. सो या या सो 22, 2023, 2024. Yeah. So for 2024, we will go on 2024 annual report. This is 2024 annual report, and this is 2023, and this is 2022. So in 2024, we will find the margins of consolidated, not standalone. We will see the whole group, not any particular Sarah Centriware. We will see if if there is some subsidiary of Sarah Centriware. So we will look at those two. So we will go on consolidation statement of P&L. So here you can see it's standalone. So we will go and find consolidated. So here it is. So yeah, this is consolidated statement of profit and loss account for Sarah Centriware for FY24 and FY23. Here you can see for FY24, and this is FY23. So ये बात एक ध्यान में रख लेना कि हमेशा 23 के नंबर्स 24 से ही लेना है, क्योंकि ये ऑडिटेड होता है तो ये एकदम सही रहता है. अगर आपको 2023 के नंबर लेना है तो आप FY24 की एनुअल रिपोर्ट से ही लोगे. अगर अभी समझो FY22 के लेना है तो अपन 2023 की एनुअल रिपोर्ट से लेंगे, क्योंकि FY22 वाले नंबर्स ऑडिटेड रहते हैं. तो अब देखो ये हो गया P&L. ठीक है, अब ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो अपन इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे. अभी अपन 2024 का ले रहे हैं तो इसको कॉपी करके पेस्ट. या दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेरा सेंटिवर ने अपने जो जो प्रोडक्ट बेचे वो हो गया रेवेन्यू. उससे कितना रेवेन्यू बना जो भी प्रोडक्ट बेचे उससे. रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड. रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर हम अब अदर इनकम अभी नहीं लेंगे, अदर इनकम हम नीचे लेंगे थोड़ा. अभी अपन ढूंढेंगे सी ओ जी एस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो अगर सेरा सेंट्रीवेल देखो, अब आप सबको पता है सेरा सेंट्रीवेल नल बनाती है और वो वार्डरोब बनाती है. तो अब नल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, तो नल बनाने के स्टार्टिंग से एंडिंग तक, पैकेजिंग तक, जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो खर्चे लगते हैं नल बनाने के लिए, वो सब सी होते हैं. तो इस सी में 3 चीज़ होती है. COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. फिर होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. अब इनमें भी 2 अलग अलग चीज़ होती है, तो वो भी मैं बताता हूँ. एक मिनट. चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ओके, तो एक बार नंबर लिख लेता हूँ उनके मैं. ये हो गया COMC, ये हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और ये हो गया चेंजेस इन इन्वेंट्री. अब क्या होता है, ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, ये एक तरीके से कंपनी ट्रेडिंग करती है ना, जो लेती है बाहर से और दूसरों को बेचती है, और खुद कुछ इन हाउस नहीं बनाती, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करती, खाली ट्रेडिंग करती है. वो वाले कंपनी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में दिखाता है. तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी अपना जो मेन फोकस है मार्जिन की, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन, तो वो करते हैं. तो अभी देखो 187,
941 इज द रेवेन्यू। ठीक है। अब आएगा सबसे पहला मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस सी ओ जी एस। अब सी ओ जी एस में अपन ये तीनों आ गए, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ये, मार्जिन नहीं। अब देखो सिंपल, अगर इधर हम सी ओ जी एस ले तो सी ओ जी एस हो गया इन तीनों का, ये सी ओ एम सी प्लस सी ए प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया सी ओ जी एस। अब रेवेन्यू माइनस सी ओ जी एस, ये हो गया 8278 लाख सी ओ जी एस हो गया। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 2024 का, ये हो गया इनका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ये। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। तो ये आया 53%। ठीक, मतलब नल इन्होंने 50 रुपये में बनाया। ठीक है, और जैसे जो भी नल बनाया उसमें इन्होंने 50 रुपये एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा जोड़ के उनको उन्होंने बेचा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया ये। ठीक है, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब और भी खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, तो वी विल टेक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। दिस इज द टोटल सैलरी विच दे गिव टू देयर एम्प्लॉय टॉप मैनेजमेंट। It is all related to salary only. So we will take that number, which is this 230 crore, and we will take other expense next. Other expense like whatever the other expense for a company, like power and gas, selling and distribution expense, these are all related in value chain. Whatever the value chain is for a company, वैल्यू चेन क्या होता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी समझो अदर एक्सपेंस मतलब ऑल दूसरे खर्चे। तो अगर उसको लूँ मैं, तो वो है इस कंपनी का, देखो 246241 ये रहा, तो वो मैंने लिख दिया। अब इसके वजह से आएगा अपने का एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिशिएशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन। तो इसका अब होगा इजिकल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो सैलरी प्रोवाइड की, माइनस जो दूसरे खर्चे थे, तो वो आ गया एबिटा। ठीक है, अब एबिटा मार्जिन क्या होगा, सिंपल है वही, एबिटा डिवाइड बाय रेवेन्यू। एबिटा डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना आया, 16%। एबिटा मार्जिन हो गया 16% एक कंपनी का। अब दो मार्जिन हो गए जो अपने को कैलकुलेट करने थे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एक हो गया एबिटा मार्जिन। अब निकालेंगे एबिट मार्जिन, लेकिन एबिट मार्जिन होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। तो इसमें से डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन वो भी निकाल देंगे। तो ये रहा डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन एक्सपेंस, तो ये भी अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि अपने पास आ जाए एबिट मार्जिन। तो ये आ गया एबिट मार्जिन इजिकल्स टू एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन क्या होता है, जैसे मशीनरी होती है तो डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू कम होती रहती है मशीन की, सो दैट इज़ डेप्रिसिएशन। एंड अमोटाइजेशन अभी के लिए आप समझो कि एक बार डेप्रिसिएशन ही समझो। अब आ गया एबिट मार्जिन। अब फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी पे करती है बैंक को, अगर कोई लोन लेती है तो कोई डेट लेती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हो जाता है फाइनेंस कॉस्ट। अब हम लेंगे ऊपर जो छोड़ा था ना अदर इनकम, वो अब लेंगे। क्योंकि मैंने इसको नीचे क्यों लिया है, क्योंकि जनरली देखो अभी कोर बिजनेस अदर इनकम मतलब कोई दूसरी जगह कोई इन्वेस्टमेंट डाल दी उस पर इनकम आ गई, या कोई दूसरी अदर इनकम आ गई, वो नॉन कोर बिजनेस हो, कोर बिजनेस से नहीं आ रही, वो अलग दूसरी जगह से वो इनकम आ रही है। इसलिए इसको अपन नीचे लेते हैं ताकि अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्योर एंड प्योर खाली कोर बिजनेस ऑपरेशन का रहे, ना कि नॉन कोर जो अदर इनकम है वो भी अपन ऐड कर दें। तो इसलिए एक बार अदर इनकम इसको हम नीचे लेते हैं, और नीचे लेना ही बढ़िया रहता है और यही सही तरीका है। इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, अदर इनकम को नीचे ही लेते हैं। बहुत लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये लेते हैं 193, बट दैट इज़ रॉन्ग। वी ऑलवेज शुड
take revenue from operation this and other income below EBITDA margin and EBIT margin. So here we will come profit before tax, which will be nothing but EBITDA, minus finance cost plus other income. Here we will add plus. Here we will add other income. So which come near PBT, which is this. Now, generally people don't see PBT margin, but if you want to see if you want to see again, the formula is same. PBT margin, PBT divided by revenue from operation. Now here there is something which we should look at, which is EBITDA margin. Yeah, sorry, we haven't done EBIT margin. So yeah, so this is EBIT, and EBITDA margin is this divided by again revenue from operation, which is 14%. Here you can see that EBIT margin is 15%, but after subtracting finance cost and adding other income, the PBT margin are more. It is because Sarah Centrifugal don't have so much of debt, but their other income is very much. So therefore their PBT margin also high as compared to EBIT margin. Sorry. But generally what happen is, in many of in in other companies, generally EBIT margin is more than PBT margin will less, because they have a lot of debt or other things and their other income is not so much. But in Sarah Centrifugal their other income is high as compared to their debt, therefore their PBT margin is more. Now we will deduct tax, which is this current tax and deferred tax. We will add both of this, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, और ये क्या होता है वो भी मैं आगे की वीडियोस में सब बताऊंगा. सो या, सो करंट टैक्स विच इज 669.65 and deferred tax is this. If we add both of these, we will get the total tax. So yeah, so PAT, profit after tax. What is the profit which they have earned, which will be nothing but PBT minus tax, sorry, which will be nothing but PBT minus tax expense. Now PAT margin is equal to this divided by revenue from operation, which will be 13%. So this is their PAT margin. This is calculating margins are very easy. You just need to divide by revenue. And but one thing should be clear, that we should not take other income and revenue from operation. Rather we should put other income here below finance cost or below EBIT margin. So the PBT PAT margin is this, gross profit margin is this, EBITDA margin is this, EBIT margin is this. Generally people don't see PBT margin, but here this is PBT margin. So yeah, so gross profit margin is equals to gross profit divided by revenue. EBITDA margin is equals to EBITDA divided by revenue. Okay, EBIT margin same. Oh, sorry. EBIT divided by revenue, and PAT margin is PAT divided by revenue. So these are the four margins which everyone see in a company. So you guys should know how to calculate gross profit margin, EBITDA margin, EBIT margin and PBT margin. So now we will do for 2023, then 2022. So as I have told you that for 2023 we will take number from FY24. So here we have those numbers. So without any time waste, I will load this number, copy and paste 049 COGS purchase of stock in trade. COGS is nothing but the calculation of all three. This, see,
cost of material consumed, purchase of stock in trade, and changes in inventory of finished good, work in progress, and stock in trade. So gross profit will be revenue minus COGS, which will be revenue minus COGS, and here this total sum of all three number. So this is our gross profit. So same gross profit margin is 54% for FY23, which is gross profit divided by revenue. Now salary which they have given in FY23, which is 2214, this. Then other expenses, all those expense other than COGS, but this expense also company uh, need to have. So the formula of EBITDA will be gross profit margin minus employee benefit expense minus other expense. Okay, and EBITDA margin will be EBITDA divided by revenue. So EBITDA margin. Now for F5, now we will take depreciation and amortization, which is this, which is the value which हर साल जो प्रोडक्ट बिल्डिंग्स की वैल्यू कम होती जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. So EBIT will be EBITDA minus depreciation and amortization. So if you see here, the D and A, which is depreciation and amortization, will be EBIT. So here D and A will are not there because we have subtracted depreciation and amortization. So EBITDA margin will be EBIT divided by revenue. So EBIT divided by revenue. Now finance cost, which will be 604.83, and other income, which we will take now. And I you know, so you got to know why to take other income below, because we need to find the gross profit margin, EBITDA margin, EBIT margin for core operation. What's the main core operation of a business, not taking those other income which can be sometimes very high, sometimes very low. So it will make our margins very fluctuate, not so much, because generally other income की number इतने बड़े नहीं होते, but then to some companies may have this. So therefore why should we should add this in revenue from operation number. So same PBT will be EBIT minus finance plus other income. So here we will add other income, and PBT margin, which will be PBT divided by revenue. Now tax expense, which will be deferred tax and current tax. Current tax, deferred tax. Again we will add both current tax plus deferred tax, and PAT will be PBT minus tax expense. PAT means profit after tax. PBT means profit before tax. Profit before tax. PAT will be profit after tax, which is PBT minus tax. Now PAT margin will be PAT divided by revenue, which is PAT E35 divided by E6, which is revenue from operation. Now for FY22, we will take number from FY23. Yeah, FY23. So see, this is FY23 AR of Sarah Santiware, which I have got from Sarah Santiware. Here documents. This is from screener documents. Here we will get financial year FY23 for Sarah Santiware. This is the annual report. Now we will go in not standalone but consolidated numbers. Yeah, so here it is. So this is revenue from operation for FY23, which we have already taken from FY24. So now we will take FY22 number from revenue from FY2023. So this is revenue from operation. We will not take other income here too. COGS will be nothing but addition of all those three line item: COMC, purchase of stock in trade, and changes in inventory of finished goods, work in progress, and stock in trade. Yeah, so gross profit will be revenue minus COGS, and COGS I have sum of all those three line items. So the gross profit margin will be 53%, right? Now salary and other expense, which will be 19361 193 crore, and other income, which will be 339 crore. This all numbers are in lakhs. So EBITDA will be nothing but gross profit minus employee benefit expense minus other expense. Now EBITDA margin will be 16%. Depreciation amortization, which is here 3 to 4,
EBIT will be nothing but EBITDA minus depreciation amortization. EBITDA margin will be EBIT divided by revenue. Now, if we come and look at finance cost, so the finance cost is 528.51, and here we will again take other income below EBIT. Then we will PBT, then same PBT margin, and tax expense. So 5391 is current tax, and deferred tax is 209.53. So tax expense will be this, and PAT will be this, which is PBT minus tax, and PAT margin will be this 11%. So if you see, like for 3 years which we have done, which is FY 2022, FY 23, and FY 24, if we see the gross profit margin for this company are in a line for near between 53 and 54, but it is wrong to see 3 years. We need to see at least for last 5 years data, so FY21 and FY22. And if you see in EBITDA margin, it is also in line between 16-17. Same with EBIT margin, same with PBT, and same with PAT margin. Now this is all those four margins which are mostly used by people. They even ask what, it's very simple to calculate, just, but people rely on screener or any other data. But it is better to go and look that in financial report, in annual report, where you will find those data, and this is for consolidated, right? Same way you can do for standalone, which is same way, same revenue from operations, COGS, gross profit, EBITDA, depreciation, finance cost, tax, and all those line item. Same for standalone, same for standalone, and same for consolidated. Now, what I want is you do practice of this. It is very simple exercise. There is nothing such thing complicated. It is so very simple. This all numbers are in lakhs. Now this thing that why this 3 are COGS for a company. So I will do a new video in this on this topic. So currently in this video my main motive was to help you understand how to calculate gross profit margin, EBITDA margin, EBIT margin, and PAT margin, which we have done. Now I want you all guys to go and practice this at home. It will be just, it is very simple. There is nothing so much complicated in it. Go and practice and punch data for last 5 years, and you know from where now to get those data. So now if we see like cross of in screener data, that what is the in PNL, if we see like they are not giving here, but if you see in any other website they will give you that gross profit margin, and you can recheck that is your number is right or wrong. But do keep in mind that it can be difference, because some website add other income in revenue from operation only, but we will generally not add there, but we will add is it below EBIT margin. Why? Because it is non-core business income, and we need to find core business operation only. Therefore we will add below EBIT. So yeah, in this video I need to help you understand with this thing. In next video I will teach you another thing like COGS. There are a lot of things which I need to teach. So yeah, I will stop my recording, and thank you for watching. And yeah, do comment that if you want a same video in like here we have taken Sarah sanitary ware. But now if you want another company, which is your favorite company, do comment. We will find the gross profit margin and all those EBITDA margin, EBIT margin, and PAT margin for that company too. So yeah, thank you very much. I will stop the recording. Thank you.